आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में बहुत जल्द IICCB की जानिब से अपॉर्चुनिटीज अनलॉक्ड रियल स्टेट कनेक्ट 2025 को बड़े ही उम्दा अंदाज में मुनक्किद किया जा रहा है। शेराटन ग्रैंड होटल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेंगलोर में आने वाले 15 जनवरी 2025 चाहशुमे की सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक शानदार अपॉर्चुनिटीज अनलॉक के तहत IICCB इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो की जानिब से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रियल स्टेट बिजनेसेस के साथ जुड़कर बड़ा ही जरूरी और दिलचस्प प्रोग्राम रियल स्टेट कनेक्ट 2025 मुनक्किद किया जा रहा है। IICCB के साथ कई सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं जो कि इस प्रोग्राम को रखने में अपना ताउन भी करती हैं, जैसे कि टाउनशिप रियल स्टेट दुबई, प्रेस्टीज ग्रुप, जिलियन प्रॉपर्टीज दुबई। इन तमाम के ताउन के साथ ये बेहतरीन प्रोग्राम को रखा जा रहा है। रियल स्टेट कनेक्ट 2025 प्रोग्राम के मुतालिक अहम जानकारियां फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम के जिम्मेदारान और ट्रेनीज ने प्रेस मीट करते हुए कहा कि रियल स्टेट कम्युनिटी से जुड़े हुए हजरात इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अपने बिजनेस को और मजबूत करते हुए इसमें तरक्की करने के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को रखने का मकसद है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार लाया जाए, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट और कम्युनिटी की अच्छे अंदाज से ग्रोथ की जाए और यहाँ के मुआशी हालात में सुधार लाया जाए। लिहाजा बता दिया जाए कि इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो पिछले कई सालों से कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने, बिजनेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बखूबी अंदाज से प्रमोट कर रहा है, जो कि इनका असल मकसद है और इसी मकसद के लिए इस इदारे को कायम किया गया है। लिहाजा IICCB अपने इस मकसद को आज भी बखूबी अंदाज से अंजाम दे रहा है और इसी नीयत के साथ उनका ये ख्वाब और सपना है कि रियल स्टेट कम्युनिटी में बिजनेस जॉइंट की शुरुआत करें और सभी एक साथ मिलकर अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। Take this mission forward. IICCB in the last many years has done different events focused on different aspects of business. I would also like to introduce the people here in this press meeting here. Our president, Mr. Noorul Amin, has not been able to join us in this press meet. Whom we have here is me, as you all know, SS Afsar Khadri. I am the Vice President for Strategies and also the CEO for this event that we have. And with us we have Mr. Azim Khan Sahab, who is the VP for President's Office, and we have Mr. Ali, Vice President Training, and we have Dr. Munawara Sultana, who is the member of committee as such. Okay, and as we said, I would like to just give you the last words as such. The people who are going to be talking as such, हमारे जो speakers होंगे, they are the stalwarts from the industry. They are the industry leaders who will be showcasing their journey to success, so that the participants can learn from them, get motivated, and try to walk the same path which the others have actually taken and reached success as well. The whole idea is to actually create, as Dr. Sahiba said, we want to have a healthier community. Also, we would like to have a richer community. हम लोग we want economical upliftment and growth of the community. वही फंडा है और वही मोटिव है IICCB का, and inshallah we are on the path and we will achieve that. Indian Islamic Chamber of Commerce was fundamentally founded for the economical upliftment of the community and the society at large. आप जैसे जानते हैं, पिछले कई सालों से इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है और इसी राह में काम कर रहा है। वी हैव ऑलवेज वॉक्ड विथ अ ड्रीम that we will have business giants from our community, that we will excel in all the domains of business, and that is the dream with which we take this mission forward. IICCB in the last many years has done different events focused on different aspects of business. Like every time when we have a
business networking event. It is with a theme. Earlier you have witnessed that we have done events with the theme of retail management. We have done on the theme of women empowerment and many others. And we would like to announce today that the next event, which is scheduled on the 15th of January 2025 in Hotel Sheraton. The theme that we have for this particular event is construction, real estate, architecture, interiors and the associate industries. हम लोग ये चाहते हैं कि इस इवेंट में जो है मिड लेवल, मिड साइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, पीपल हु आर इनटू रियल एस्टेट मैनेजमेंट, ये जो है जो बिजनेस जायंट्स हैं इनके साथ में मिले, look at the opportunities which are available to them to collaborate, to partner with the other giants and to also collaborate with other associated partners so that they will be able to actually we don't have the concept of having a chief guest access, we will have many guests of honors. The prime speakers जो होंगे, अब हमारे साथ जो है हमारे जो स्पीकर हैं कर्नाटका असेंबली के डॉक्टर UT खादर साहब, he also has given a consent to participate. Inshallah, if he is going to be here, he will be there. Mehruz Khan, who is the chairman of the 5 schemes from the Karnataka state government, he will be there. The Minister of Forestry, Karnataka government, he will be there. और उसके अलावा जो है we have श्री अगस्त्य गुरुजी, वेमा फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन हैं, वो भी साथ में रहेंगे. और उसके साथ दी एलाइट स्पीकर्स हु आर गोइंग टू बी देयर, ये तमाम जो है गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे. कि बोले तो ये इट इज़ एक्चुअली ए कॉर्पोरेट प्रोग्राम है. ओके, सो वी विल हैव मल्टीपल पीपल हु विल बी एक्चुअली कमिंग एज गेस्ट्स ऑफ ऑनर. चेंबर ऑफ कॉमर्स होता यह है कि तमाम बिजनेसेस छोटे और बड़े जो हैं, इट इज़ अ कंसोर्शियम ऑफ बिजनेसेस. जैसे FKCC है, इट्स अ चेंबर ऑफ कॉमर्स. तो हम जो है ये चेंबर ऑफ कॉमर्स, वी डू नॉट हैव ए सेपरेट चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर द कम्युनिटी. हम लोग कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक ये सोच लेकर चले हैं कि IACCB विल कम टू दैट लेवल ऑफ FKCCI, जहाँ पर इस चेंबर ऑफ कॉमर्स से जो है फॉर इंस्टेंस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी करती है, उनको अगर सर्टिफिकेट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन हो, वो इस चेंबर से मिले. सरकार से जो है अगर माइनॉरिटीज़ के कुछ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर मांग रखनी है, तो हम लोग एज ए कंसोर्शियम वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी विद द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमेशा क्या होता है, एक इंडिविजुअल की ताकत अलग होती है और एक ग्रुप की ताकत अलग होती है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए कंसोर्शियम ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस ओनर्स. हमारे पास वी हैव अबाउट 5000 प्लस मेंबर्स एज सच. हमारा एम है कि अगले 3-4 साल में जो है इसको 50,000 क्रॉस करें. वी शुड हैव ए बिग अमाउंट ऑफ business houses to join with us so that it will become a big power. हम लोग छोटे छोटे बिजनेसेस को जो है ग्रूम करेंगे, उनको ऊपर लेकर आएंगे. हमारा ये भी ख्वाब है कि हमारी कम्युनिटी से जो है यूनिकॉर्न्स को क्रिएट करें, $1 billion कंपनीज. तो इसके लिए जो है वी हैव, देखिए जो छोटे छोटे बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस करते हैं, उन्हीं से जो है उम्मीद कर सकते हैं कि दे विल ग्रो बिग. जो प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन गिव मे बी गेट ए पैकेज ऑफ 10 lakhs और 50 lakhs और 1 crore. उसके बाद में उसके आगे उनका ग्रोथ नहीं है. जब बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स में जाते हैं, वही उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं कि दे कैन ग्रो टू $1 billion कंपनी और $1 trillion कंपनी. ये प्रोफेशन में नहीं होता है. तो हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे कंपनीज हैं उनको ग्रूम करके एक ऐसे सक्सेस पाथ पर डालें जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो, और उम्मीद यही करते हैं कि ये लोग आगे ग्रो करें एंड दे बिकम द सपोर्ट फॉर द अदर स्मॉलर कंपनीज विच आर कमिंग बिहाइंड देम. ओके, सी कॉमन पब्लिक इन द सेंस जो भी इन्वाइटीज हैं, दे आर ओनली अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन. हम लोग जो है वी आर गेटिंग दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट ओनली ऑन रजिस्ट्रेशन. देयर इज़ नो जस्ट फ्लो ऑफ पीपल एज इट इज़. 250 to 300 डेलीगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए, और जो पार्टिसिपेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं
12 to 15 organizations are participating. और जो लिस्ट ऑफ स्पीकर्स है तकरीबन 8 to 10 स्पीकर्स वी विल हैव, और जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज होंगे वो खुद भी जो है अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशंस करेंगे, और जो इंडिविजुअल डेलीगेट्स होंगे, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट विद द कंपनीज दे कैन कोलैबोरेट, if they want to partner with them or trade with them. It is a trading platform which is open for you to collaborate and go partner. It's B2B, it could be B2C. दुबई के दो कंपनीज हैं, वी हैव टू कंपनीज, टाउनशिप एंड Zillion Properties. We were expecting a delegation also from Dubai to come, which has not happened in the last moment. As we usher into this new year of 2025, I would like to welcome you all for the real estate event that's happening at Hotel Sheraton World Trade Center in Bangalore City on the 15th of Jan. Along with my colleagues, we will be there. This particular event largely aims at getting everybody together under one roof, be it the real estate people belonging to various departments, the engineers or the interior decorators or automation, and many more innovative things that are happening in the real estate today, in the industry today. So apart from this, like my colleagues have already mentioned, that there have been a lot of events in the past which have been conducted and successfully completed too, and they have trained a lot of people, and we have been fulfilling the purpose of the formation of ISACB, that is with regard to honing the skills, nurturing talents, giving them a platform to showcase their business, helping them develop and become much more bigger and better business entrepreneurs or in their respective fields. We are also providing various courses for a lot of other people and students especially. We are trying to reach to the youth also. So this particular event will help everybody. Now coming to women empowerment. ISCCB has been at the very helm of these affairs of the women empowerment, as in they have helped a lot of women from various sections of the society, from various professionals, to come onto a platform to develop their businesses and move ahead, create a name for themselves, and also as startup. So we are very proud to say that we will be having some speakers have been a very important and integral part of ISCCB and have grown from ISCCB, what do I say, with the help and support of ISCCB, and they will be coming as speakers as well. Couple of them who I would like to tell is Hudsia Nazir. She's a world, we have also felicitated all the women achievers, okay, and on Women's Day. So these are the following women we have felicitated. Hudsia Nazir, who is also a world heavyweight champion. Husna Rahman, who is a senior architect and designer from UK. Kausar Khan, who is an educationist and a corporate trainer as well. Husna Tabassum, who is a forensic scientist with the police, Karnataka Police Department. Now, taking this forward, we will be conducting बहुत सारे medical programs, wellness programs, health related issues को लेके, whether it is for the women, for the children, for the elderlies, across all age groups and across all the diseases, we would say, so that we are able to have a more healthier community and a more focused. So there are a lot of programs that we have planned, hoping to do it on a regular basis, inshallah. Let's see how it goes, and with all your support, and thanks for coming, with all your support and with the support of my colleagues too, we will continue to do our best for the community in whatever way we can. 2025 हमारे लिए बहुत नया साल और ऐसा साल है जिसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बेंगलुरु मैं सारी दुनिया में देखता हूँ काफ़ी नाम कमाया है। मैं उस ज़माने में जब मेरा इनिशियल टाइम था तो ओबामा भी है ना बेंगलुरु के अंदर रहने का इरादा रखता था। ही हैज़ टोल्ड ही विल सेटल ईदर इन बफलो इन USA और इन कर्नाटका बेंगलोर। सो सच
place where we are living, and we have the opportunity to uplift so many people and bring them income. Our Bangalore rate is higher than any other city in India, and I roam entire world. In Dubai, I got my firm by name Zillions Properties. There I compared. Bangalore rate is double than Dubai rate. And we give this example. Why? Because Bangalore is having lot of opportunities. यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के साथ उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, हर जगह देखिए लोग बाहर से आए बसे हुए हैं और बेंगलुरु फ्लरिश हो रहा है। जिस वक्त मैं एंटर हुआ बेंगलुरु के अंदर 1980 में, तो मैं देख रहा था बेंगलुरु एक तरफ 6 किलोमीटर जा रहा था और एक दूसरी तरफ 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पे था। आज 60 किलोमीटर पे एक्वायर हुआ है। ये एक्वायर होने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और लोकल जो ज़मींदार थे यहाँ पर, लैंडलॉर्ड्स, दे आर ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी। Whereas this one is concerned, I have seen lot of people in front of me, they have become millionaires. So thus being the case, ISB has taken this task to see that real estate, it has to go still further, and lot of people should get opportunity, income. They have to bring their children and see that they are settled in their life. And already I got Zillions property firm here in Bangalore. We are doing lot of projects. I have done lot of projects. More than 5,000 sites I have sold to my friends, to my known people in my 30 years of real estate service. Whereas now I am doing in Dubai, I am doing in USA. So such opportunities are there. I welcome people who are all attending this IICCB real estate event. They will get lot of opportunities, lot of contacts, lot of income. Entire industry is visiting Sheraton. When we talk about real estate, it is the biggest industry which is supporting all other industries. And this is the base of industries, wherein we see that today it is about 500 trillion economy in the world. And Bangalore and India alone contributes in Bangalore about 13% of the entire GDP of the real estate. And since we are sitting on such a huge real estate market, and why don't we use this, or why don't we utilize this? And we see that there is a lot of unorganized sectors which we are flourishing in the market, and they have the business running up and running, but there is no vision, or they are lacking into the creating a scalable business altogether, or a system we call it. So here we pitched in as IICCB that we see the need that how do we bridge this gap between the organized and the unorganized sector. The people who are speaking on different subjects, like for example, we have architects who are coming in and they will be sharing their knowledge on how you can have a sustainable interiors or architecture, or the building designs, and how we can have different kinds of materials which are available today, the different trends. So our vision is that how we can collaborate and work together so that there are new trends emerging, and so that our industry should not be left behind. We could achieve these in the coming era, because the technology is moving very fast today, and it is going at a very rapid speed. And we expect that from IICCB that every person should benefit out of this. This is a very good event which we are conducting. I hope that every individual who attends and who participates will benefit and will take away something where they can scale up their business, or tomorrow they can network, or maybe they have some knowledge sharing, or we have a lot of things coming up. I shall continue talking about that.
So the real estate, it's untouched or untapped from our community. So we want to highlight some of the features which are some of the opportunities which is available right now in the market. For example, so we have big players, but there is no synchronize or there is no connect between big players and the small players. We are here. IICCB is here, or it's a platform where we can bridge the gap between the big players and the small players. And also, when we talk about real estate, it's not only about construction, it's not about only about material. There are so many opportunities that you find right now in the real estate industry. So, for example, there is the facility management. So, what do you mean by facility management? If you have a huge building, now you need to manage. Somebody has to manage it. Somebody has to facilitate it. Somebody has to keep it clean and running so that the guests or the residents who are staying there should feel that they are staying in a good environment. So we have a lot of scope in that where our community is lacking in that. So we want to highlight this is one of the biggest opportunity in the real estate to touch facility management. So we highlight this and we urge that our community business people, if they can work on this and then come up with the new ideas and grab this opportunity and grow their businesses.